Okay, children, this is your problem number 15 from your exercise 6.5. Very important question as the examination point of view, and many times has been asked in the board examination. So this is your query also कि ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, इसको हम यहाँ पे वीडियो के थ्रू करेंगे. This is given in the statement that in an equilateral triangle ABC, B is a point on side BC where BD is 1/3 of BC. The side BC is BD contained 1/3 of this BC. BC side का ये 1/3 है. This is the diagram for this question, and where ABC is a equilateral triangle. Now we need to prove this relation 9AB square is equals to 7AB का whole square. So what is given to us? सबसे पहले हम वो लिखेंगे. This is your 90 degree here. So what is given? This is given here. This is an equilateral triangle. मतलब equilateral triangle means a triangle whose all sides are equal. So AB, the side AB is equal to BC equal to AC. Let it be, हमने यहाँ पे A unit ये मान लेते हैं. This is equal to A unit. The measurement are not given here, so we will let it A unit here. So ये मैंने मान लिया कि ये A unit के बराबर है और ये B के बराबर है. First of all, this is ABC is a equilateral triangle. Now the next point is, what is given to us that BD is 1/3 of BC. Base का ये 1/3 है. Now to apply the Pythagoras theorem, we need to draw a perpendicular in this diagram. So हमने यहाँ पे एक perpendicular बना लिया है AE. You know that कि Pythagoras theorem can work only in a right angle triangle. So हमने AE एक perpendicular draw कर लिया है. So first of all we will apply Pythagoras theorem to triangle ABE. So from triangle ABE by Pythagoras theorem. What we can write by Pythagoras theorem, that hypotenuse square equals to base का square plus perpendicular का square. So here AB का square will be equals to BE. This is your hypotenuse. We will consider this triangle ABE. This triangle. Firstly, we will consider this triangle ABE. So AB का square is equals to BE का square, base का square plus AE का square. Is that okay? Now, this will be our equation number 1. Similarly, we have two right angle triangle here. This triangle now ADE. We need to find ADE. तो ADE में. So apply by applying Pythagoras theorem to triangle ADE. Then ऐसा मैंने क्यों किया? देखो यहां पे मुझे इसकी सब्स्टिट्यूशन चाहिए होगी किसकी? परपेंडिकुलर AE की, बिकॉज AE हमारा इमेजिनरी है, तो वी नीड टू रिप्लेस इट. सो हम इसमें लगाएंगे. सो बाय अप्लाइंग ADE में क्या हो जाएगा? AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर. DE स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर. दिस इज आवर रिलेशन नंबर 2. अब यही हमने प्रूव करना है कि अब ध्यान से देखें, अगर आप रिलेशन देख रहे हो तो 9AD, दिस इज आवर AD. तो इसी के लिए दैट मींस वी नीड टू मेक सम चेंजेस हियर. यहां पे हम कुछ चेंजेस लाएंगे सो दैट वी कैन राइट इन दिस फॉर्म. अब हम क्या करेंगे कि AD मेरे पास आ गया. DE वी कैन राइट यहां से इक्वेशन नंबर 1 से आपने क्या निकाल लेना है? द वैल्यू ऑफ AE, which will be substitute here.
AE in place of AE. तो अगर आप यहाँ से AE निकालोगे so AE का स्क्वायर will be simply equals to, इसको हम इधर को शिफ्ट कर लेंगे, AB का स्क्वायर माइनस व्हाट, BE का स्क्वायर. सो यहाँ पे हम BE का स्क्वायर लिख लेंगे. So this is our replacement for AE square. AE square की जगह हम क्या लिख लेंगे, AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर. So now this relation becomes AD का स्क्वायर equals to DE square plus this relation AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर. Now what we have, अब देखते हैं, अब हम इसके रिप्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे. AD will remain as it is. DE, if you look DE here, तो DE का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा और AB का वैल्यू is already given that AB BC is equal to A. So that means in place of this I can write it A का square. BE is also, you can see here, BE is half of BC. ठीक है ना? So what we can write it, half A का whole square. So BE is half of BC here and DE. Now we need DE. So we will calculate DE here. How we calculate DE? So DE, if you take this line segment BE, so BE जो है that is combination of BD plus DE और यही हमने DE निकालना है. BE की वैल्यू हमें पता है, this is half of BC because BC is equal to A also. BC, AB equal to BC equal to AC equal to A unit. So this is half A minus BD. BD is given to you, already given to you. ठीक है ना? BD equals to 1/3 of BC. So BC is also equal to A. So what we will write here, 1/3 of A plus DE. We need to find this DE, तो हम इसको replace कर लेंगे. So this will become A by 2 minus 1 into A by 3 here. It will comes out DE. So what it comes, आप LCM ले लोगे, 2 3 6 आ जाएगा. ठीक है, 3A minus 2A. So that means 1A only. So A upon 6 will be equals to DE only. So this is the replacement for DE. So we will substitute this value here in this relation, A by 6 का whole square. So now simplify this. By simplifying this, what we need, A का स्क्वायर आ जाएगा, A स्क्वायर ओवर 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है और A स्क्वायर will remain as it is. 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा, that means 1 into A square upon 4 आ जाएगा. Now what we need, now we will find LCM of 4, 1 and 36. That is very easy also. Because the 36 is a multiple of 4, for 4 9s are 36. What we will do, we will write here 36 only. So A square plus, this is minus here, A square minus this is 1, तो यहाँ पे 36 A square आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 9s are 36 होता तो ये 9A square आ जाएगा. तो अब अगर आप इसको माइनस करोगे यहाँ पे in the next part, so ये ऐड होके कितना हो जाएगा, 36 plus 37, this will be 37 A square minus 9A square upon 36. So in this half we have AD का square, we will keep writing this as it is here. So यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, AD का square will be equals, this is 28 A square over 36. So this will cut out from 7 4s are 28 and this will be 9s are 9 4s are 36. So final answer would be AD का square is equal to 28 A square over 7A square over 9. So 9 will be cross multiplied, 9AD का square, that will be equals to
7a का square. In place of a, what we can write? ab, bc, ac. In our relation, this is ab is given, तो a की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ab भी लिख सकते हैं. तो ये सिंपल सा ये आ जाएगा 9ad का स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab का स्क्वायर. So this is our final answer, and which is to prove. And we will just write hence proved. So this is it.